This is what we have seen. Okay, so I told you how to calculate the output voltage, how to calculate the output voltage कैसे calculate करना है. Because what is कहाँ से हम start करेंगे जब भी आपको output voltage calculate करना होता है, we'll start from your base current. We should know your base current. अगर base current directly दे रखा है, so directly we can go for collector current. If base current is not given in the question, what is that we do is we use this input loop equation to calculate the base current, right? What is that will be given in this question is VBB will be given, RB will be given, and VBE will be given in the question. So यहाँ से only one unknown parameter is IB. So we'll be calculating this IB, right? And we have this current amplification factor या तो current gain बोलते हैं beta. Beta will be given in the question. Beta is equal to IC by IB. So using this expression and by having the value of IB, I can calculate my IC. जब मेरे पास IC की value available होती है, what is that I can calculate is I can calculate my output voltage. जैसे VCE जो होता है, this is nothing but my output voltage, which is equal to VCC minus IC into RC, right? IC हमने यहाँ से calculate कर लिया. Just plug in this IC over here, and you will get the value of V0, right? So this is a basic steps that we follow to calculate the output voltage, right? इस तरीके से हम calculate करते हैं. So these two equations are very important: input loop equation and the output voltage loop equation. Okay. So this is also something basic that we have discussed. Okay. So we are discussing about two important parameters. One is alpha and one is beta, right? Alpha beta का हमने derivation भी देखा था. Derivation I mean alpha in terms of beta, right? If beta is given, how do I calculate the value of alpha? So what is the expression beta by 1 plus beta? And if I want beta in terms of alpha, this is the expression alpha by 1 minus alpha, right? So one thing should be known in your mind, that range of alpha, the range of alpha is almost close to 1. Alpha का value कितना है? It is almost close to 1. 0.98 to 0.99 के करीब होता है alpha का value, right? Because what is that we know? IC is equal to alpha times IE. IC is equal to alpha times IE. And IB का जो actual expression क्या है? ये expression होता है. जहाँ पे IB it's very small. IB it's very small. So what is that I can say is IE is almost equivalent to IC. It is almost equivalent to IC. तो इसलिए alpha का जो value होता है that is almost close to 1. Okay. And if I talk about beta, beta is nothing but the current gain. And current gain का value बहुत ज़्यादा होता है. From electron movement point of view हमने देखा था कि white is very large. So if I typically talk about beta, the value of beta is 50 to 400. So this is what I have seen. Okay. If any one of this is given, if beta is given, you can calculate alpha, and if alpha is given, you can calculate the beta. क्या पता होना चाहिए? बस आपको ये equation आनी चाहिए. And after that, you should know this: IC is equal to alpha times IE, and IC by IB is equal to beta. So these are the two equations that you should. So at the end हमने क्या देखा था? Input characteristics. Input characteristics देखे थे हमने. Nothing but VBE, nothing but base and emitter के बीच में जो voltage होता है, that is the input voltage that will be taken on the x-axis, and IB is nothing but your input current. अगर इन दोनों के हम बीच में characteristics draw करते हैं, how does that looks like? So this is how it looks like, right? कैसा है ये? जो एक नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है उसी तरीके से आपको दिखेगा, राइट? बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड, एंड व्हाट इज दैट आई नो, इफ माय ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग आई मीन आइदर एम्पलीफाइड मोड में है या ऑन स्विच मोड में है, तो डेफिनेटली ये जो VBE जो होगा दैट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, दैट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड. जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा. फॉरवर्ड बायस मतलब मिनिमम वोल्टेज should be at least 0.7. 0.7 से जब ज़्यादा मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा तब जाके ये फॉरवर्ड बायस होगा, राइट? सो नथिंग बट अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ माय ऑर्डिनरी डायोड. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. ये लास्ट क्लास में हमने सारे डिस्कस किए थे. सो व्हाट इज दैट विल स्टार्ट टुडे? विल स्टार्ट टुडे a new topic, that is BJT as a switch. What is that will start is BJT as a switch. One second. BJT as a switch. Okay. So as I told you that BJT can act as an amplifier, at the same time it can act as a switch. It can act as a switch. So first, what is that we'll say is
कि how a BJT can act as a switch. Okay, BJT एक switch की तरह कैसे act कर सकता है, right? So in the initial classes when we started off this course, we were talking about something basics के बारे में हम discuss कर रहे थे. We were discussing about the basics of a switch. We are discussing about the basics of a switch. Okay, this is nothing but a voltage source V, and this is nothing but my load resistance RL. Okay, and this is nothing but my switch S. This is nothing but my switch. This is nothing but my switch. So what is that we'll do now is, first we'll generally talk about a switch, how a switch behaves when it is in on condition and when it is in off condition, and we'll just try to replicate those results. We'll just try to replicate those results by replacing this switch with a BJT. यहाँ पे हम BJT को place करके देखेंगे तो क्या यहाँ पे जो results हैं, क्या similar results मुझे BJT पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. This is nothing but a mechanical switch. This is nothing but a simple mechanical switch. Okay. So what is that we know is two things I want. What is that? One is the voltage across the switch and one is the current through the switch. अभी इस position में क्या है, आपका switch open है. When the switch is open, what is the voltage across the switch? Anyone? When the switch is open, what is the voltage across the switch? Sir, V. Yes, it will be equivalent to the V. Nothing but this switch will be blocked. This switch will block the entire voltage. ये पूरा जो voltage होगा, this voltage will be appearing across this switch. And हमने discuss भी किया था initial classes में. So if you don't remember, please just go through that notes if you have, right? So the voltage across the switch will be equivalent to V. And what about the current through the switch? And what about the current through the switch when it is in open position? It will be zero because यहाँ पे open है, मतलब यहाँ पे कोई भी current flow नहीं कर रहा है. Nothing but this I will be equivalent to zero, right? So these two results are for a switch when the switch is in off position. Nothing but open switch. These are nothing but for an open switch. Okay. Now the switch is closed. अभी मैंने क्या कर दिया? Now the switch is closed. What about the voltage across the switch? Consider this to be an ideal switch. What will be the voltage across the switch? Zero. Yes, this will be equivalent to zero. The voltage across the switch will be equivalent to zero. And what about the current through the switch? What about the current through the switch? Current कितना होगा यहाँ पे? अगर इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करता हूँ, it will be nothing but V by RL, right? And current totally depends upon the circuit configuration, क्योंकि सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, उस पे आपका करंट डिपेंड करता है. This is nothing but a closed switch. This is nothing but when the switch is closed. Okay. So what is the point that I need to notice here is when the switch is open. When the switch is open, what is the voltage across the switch? It is almost equivalent to the entire voltage. पूरा जो voltage है, that voltage is blocked by the switch. Okay. And the second point I need to understand here is when the switch is closed. When the switch is closed, what is the voltage across the switch? The voltage across the switch is equivalent to zero. Voltage across the switch is equivalent to zero. So this is what we already know. ये चीजें हमको already पता है, right? Now what is that we'll be doing now is we will try to replace this switch. We will try to replace this switch with a BJT. किससे replace करेंगे? एक BJT से replace करेंगे, and we will see कि क्या मेरे पास ये same results आ रहे हैं या almost same result, close results मेरे पास मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. So that is what I have to do here. Is this clear? हमें ऐसे रिजल्ट चाहिए कब, जब मेरा BJT एक स्विच की तरह एक्ट कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट. ओके, सो लेट्स टेक द न्यू स्लाइड. BJT as a switch. So what is that I will draw is the simple or common emitter configuration यहाँ पे draw कर रहे हैं. And we'll discuss about this कि what is this common emitter, common base configuration, all this. But अभी के लिए, so this is nothing but my VCC. Okay, and this is nothing but my RC, and this is nothing but my current IC, and this is nothing but my current I. This is nothing but the input voltage, or else I can say V will be the voltage that is responsible for this base current IB.
Okay, and this is nothing but RB. And what about the three terminals we have? The three terminals we have is one is the collector, one is the base, and one is the emitter. ये तीनों मेरे terminals हैं. Okay. So what is that I want is I want the voltage across the switch. I want the voltage. पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? When the switch is in off position, nothing but कौन सा? Off. Yeah, I can say switch is open. We'll just try to replicate the results when the switch is open by replacing the switch with a mechanical switch with a BJT, and we'll see what is that I get. Okay. So to analyze this, what is that I want is I want my output voltage loop equation. Output voltage loop equation बताइए कोई? Anyone? Output voltage. Nothing but यहाँ पे अगर मैं output side अगर मैं KVL apply करता हूँ, what is that I get? If I apply KVL on the output side, what is that I get? VCC minus IC into RC. IC into RC. One second. IC into RC minus VCE is equivalent to 0. इसमें कोई डाउट है किसी को? Simply what is that I have done is VCC minus RC minus VCE is equivalent to 0. Okay. So what is that I want now? The voltage across the switch. And what is the voltage across the switch? Output voltage क्या है? VCE. What is that I want? VCE is the voltage across the switch, right? So that is equivalent to VCC minus IC into RC. So this is what I have. Okay, this equation is important. ये जो equation है, ये equation आपके लिए important है यहाँ. Okay, so using this equation only, we'll just see what happens. Okay, and now what happens if VBE, अगर VBE का जो voltage है, if that is less than 0.7 volts, what happens? Nothing but VBE less than 0.7 का मतलब क्या है? आपका जो emitter base junction है, that is not forward biased. Is that clear? Nothing but there will not be any conduction. There will not be any conduction until and unless the voltage across the base emitter junction is 0.7. Nothing but अगर आपके पास एक diode है, nothing but आपके पास एक EN junction है. What is the minimum voltage that you want? What is the minimum voltage that you want for the conduction to happen? The minimum voltage that we apply is 0.7. जब तक मैं 0.7 apply नहीं करूँगा, there will not be any current flowing through this PN junction. ये तो पता है आप लोगों को? What is the minimum voltage that I need to apply? The minimum voltage that I need to apply is 0.7. Unless and until it is 0.7, there will not be any conduction. There will not be any conduction. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? VBE is less than 0.7. अगर मैं VBE बोलूँ या if I simply say the voltage at the base terminal बोलूँ, क्या दोनों सेम चीजें हैं या दोनों अलग अलग हैं? Both one and the same or different? Same है. Yes. VBE बोले या तो VB बोले, both one and the same, because VBE is equivalent to VB minus VE, right? And what is VE? VE is nothing but grounded, right? So ये क्या हो जाएगा? VB minus 0, so that will be equivalent to VB. So VBE बोले या VB बोले, both one and the same, both one and the same. Okay. Now let's see what happens. So if this is less than 0.7, so what about the value of IB? I base current कितना होगा? What about the value of IB? अगर ये 0.7 से कम है तो इनपुट करंट कितना फ्लो करेगा? 0. Yes, almost 0. As I told you, right? Minimum voltage कितना चाहिए? 0.7 चाहिए करंट फ्लो करने के लिए. अगर वोल्टेज 0.7 से कम है तो ऑब्वियसली आपका जो बेस करंट होगा that will be almost equal to 0. There will be some minute current flowing because of minority charge carriers, but इसको हम यहाँ पे consider नहीं कर रहे. So almost my base current will be equivalent to 0. Okay. If my base current is equal to 0, what will happen to my collector current? What will happen to my collector current? Collector current क्या होगा? What will happen to my collector current? Anyone? No one is revising or no one is going to the. वो भी 0 हो जाएगा. IC is equivalent to. अभी मैंने बताया था कि two relations are very important. One is something called as current gain. IC is equal to beta times IB. अगर IB 0 होगा तो IC क्या होगा? IC will be equivalent to 0. Then IC will be almost equivalent to 0. So this is what you should know. Right? If IC is equivalent to 0, what will be the value of VCE? VCE की value क्या होगी बताइए एक बार.
what would be the value of VCE? If IC is equivalent to 0, what would be the value of VCC के VCE? इक्वल VCC के इक्वल हो Yes, yes. VCE will be equivalent to VCC minus IC into RC, minus IC into RC, which is equivalent to 0. So what about the value of VCE? VCE will be equivalent to the VCC. So this is the point that you need to understand here. This is the point that you need to understand here. तो अभी देखिए, so what is this? Voltage across the switch is equivalent to the entire voltage. कौन सा वोल्टेज है? यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसके बराबर है, नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द स्विच. नथिंग बट स्विच इज ट्राइंग टू ब्लॉक द वोल्टेज एंड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू VCC. पूरा वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है? स्विच के अक्रॉस आ रहा है, ठीक है. एंड व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द स्विच? स्विच के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है? स्विच के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है IC इज इक्विवेलेंट टू 0, राइट. सो इन दोनों रिजल्ट्स को लेकर मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या कैन आई जस्ट कंपेयर दैट रिजल्ट विद दिस वन? इससे क्या कंपेयर कर सकता हूँ मैं? Voltage across the switch is equivalent to V and current flowing through the switch is equivalent to 0. Can I compare this? इससे कंपेयर कर सकते हैं ये जो रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है फॉर अ सिंपल मैकेनिकल स्विच. Yes, sir. Right? So I can compare because voltage across the switch is equivalent to V and current through the switch is equivalent to 0. Right? So this is how a switch behaves. This is how the switch behaves in an off position. Nothing but जब आपका switch open है. Switch open कब होगा? This is the condition. Switch open तभी होगा जब VBE is less than 0.7. This is the right. So unless and until ये condition दे रखा होगा, मैं नहीं बोल सकता कि मेरा switch open है या closed है. So definitely I should know what is the voltage at the base terminal. Base terminal के पास मुझे voltage पता होना चाहिए. यहाँ पे it is 0.7, जिसकी वजह से base emitter junction reversed bias है. Let me write down here. The base emitter junction is reversed bias. So because of that, IB will be equivalent to 0. उसकी वजह से IC 0 हो जाएगा. IC 0 हो जाएगा तो VCE will be equivalent to VCC. So this is nothing but called as the off condition, or else I can say your switch will be operating in the cutoff region. The switch will be operating in the cutoff region. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So simply what is that I can say is my switch is in off position. There is a switch जो होगा that is in off position. This is what I can say. Okay. Now let's see what happens when the switch is in on position. Nothing but switch on कब होगा आपके हिसाब से? Switch on कब होना चाहिए? Yes, switch on कब होना चाहिए? जब सर JC और JE दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे. Okay. BJT as a switch. Okay. Forward bias मतलब what is that I need to provide? When I say forward bias, what is that I need to provide? Sir, What VB should be is the- greater than 0.7. Okay, at least VB का जो value होगा that should be 0.7. अगर VB 0.7 होगा, nothing but my base emitter junction is forward bias. So that is what I need to see. VCC, this is RC, and this is SC. This is VBB, RB, and this is nothing but my base current IB. Okay. So what are the three terminals again? So this is a terminal. This is collector. This is base, and this is nothing but my emitter. ठीक है? So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? So what is that I'm doing here is, what is that I want is, I want the switch to be in on position. I want the switch to be on. Nothing but I want the current flowing through this BJT. Right? So what is that I have to do is, मेरा जो base emitter junction जो होगा उसको मैं क्या करूँगा? Forward bias करूँगा. What is that I will do is, base emitter junction should be forward bias. When this is forward bias, base के पास voltage कितना होगा? What about the value of VBE? VBE will be equivalent to 0.7. Or else I can say the voltage at base terminal will be equivalent to 0.7. Is that clear? तभी जाके मेरा switch जो होगा वो on होगा, right? Because this is anyhow आपका जो collector base junction anyhow that is reverse bias, because this VC will be very large. जो VCC होगा very large होगा when compared to my VBB over here. So accordingly, based on that, so this definitely the voltage at collector terminal will be very large when compared to my base terminal. So because of that, this will be reverse bias. Okay, that will be
reverse bias पहले. Initially that will be reverse bias. Now what is that I'm doing here is simply slowly I'm increasing the base current. ठीक है, जैसे जैसे मैं base current को increase करूँगा, nothing but I'm increasing my VBB. Right? जैसे जैसे VBB बढ़ेगा, at one point this will be equivalent to 0.7. Nothing but ये जो होगा मेरा forward bias हो जाएगा. Nothing but a base emitter junction is forward bias. Let me write down that point here. Base emitter junction is forward bias. So if my base emitter junction is forward bias, what will happen now? What is that will flow? IB will start flowing. आपका जो base current होगा, that will start flowing. And when I have the base current, what is that I will get? अगर मेरे पास base current होगा, what is that I will get in the circuit? अगर मेरे पास base current flow कर रहा है circuit में, nothing but input side अगर base current flow कर रहा है, what is that I will notice in the circuit? एक और current flow कर रहा है, कौन सा current होगा वो? IC. Yes. Sir, IC will flow in the circuit. IC, because IC is equal to beta times IB. Because IC is equal to beta times IB. Right? As my base current is flowing, so my collector current will start flowing, which is equal to beta times IB. Okay. So this is the collector current that I have. This is the collector current that I have. Okay. Now what is that I will do is slowly मैं जो collector current है इसको मुझे increase करना है. Slowly collector current को मुझे increase करना है. Nothing but what is that I have to increase? I have to increase my base current. Base current कैसे increase होगा? How do I increase the base current? अगर input side में अगर KVL लिखते हैं, input side if I write a KVL, what is that I have is VBB minus IB RB minus VBE is equal to 0, right? So what is that I want? I want the base current. Base current is equal to VBB minus VBE divided by RB. क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पे? और is there any confusion with this equation? ये इक्वेशन कैसे आया? Nothing but if I write a KVL on the input side, this is what I get: VBB minus IB RB minus VBE is equal to 0, right? And मुझे पता है कि once this is conducting, इसकी जो वैल्यू होगी this is equivalent to 0.7. VBE जो होगा 0.7 एक बार फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. RB is a constant value. अगर मुझे IB को बढ़ाना है, if I want to increase the value of IB, what is that I have to increase? I need to increase the value of VBB. If I increase the current VBB को increase करूँगा, nothing but अगर इस voltage को मैं increase करूँगा, इस voltage को मैं increase करूँगा, तो what will happen? My IB will start increasing. What will happen? My IB will start increasing. If my IB starts increasing, what will happen? और कौन सा current increase होगा? If this IB is doubled, what will happen to my IC? यहाँ पे देखिए आप इस इक्वेशन, अगर IB increase होगा तो what will happen? IC will also increase. Okay. Now IC is increasing, तो मुझे क्या changes देखने को मिलेंगे सर्किट में? What are the changes that I can notice? IB is increasing because of the increment in this VBB. अगर मैं VBB को increase करूँगा तो IB will increase. As IB is increasing, IC will increase. And as IC is increasing, what are the changes that I will notice in the circuit? VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. Okay. What is VCE? VCE is equal to VCC minus IC into RC. Okay. ये कौन सा इक्वेशन है? आउटपुट वोल्टेज लूप इक्वेशन. आउटपुट साइड अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा KVL, so this is what I get, right? So what is that I'm increasing is I'm increasing my IC. IC current को मैं increase कर रहा हूँ. So if IC is increasing, what will happen to my VCE? Decrease होगा. VCE will decrease. VCE will decrease. Okay. So what is happening? The base current is increasing. आपका जब base current increase हो रहा है तो collector current increase होगा. And if your collector current is increasing, what will happen to your VCE? Your VCE will reduce. Your VCE will reduce. Okay. So if I choose my circuit parameters in such a way, अगर मैं beta and RC को इस तरीके से choose करता हूँ, if I choose my beta, nothing but यहाँ पे जो current gain है, beta and RC को अगर मैं choose करता हूँ carefully, right, such that at some point of time, this IC into RC is equivalent to VCC, nothing but इन दोनों का product. अगर IC RC का product धीरे-धीरे IC increase हो रहा होगा and IC RC का product
VCC के बराबर हो जाएगा, तो at some point of time what about the value of VCE? VCE will be equivalent to 0. Yes, क्या पॉइंट समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. राइट अगर मैं IC को इंक्रीज करते जाऊंगा, if I'm increasing the value of IC and if I choose my parameters beta and RC in such a way that at some point of time this reaches a value of VCC, so VCE can reach 0. VCE की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है. VCE can reach 0. So what is that I have here is VCE is 0 है, and what about the current through the switch? The current through the switch is IC. Is that clear? What is that I have? The current through the switch is IC. Current through the switch is IC. And what about the voltage across the switch? Voltage across the switch कितना है? Voltage across the switch कितना है यहाँ पे? Sir, 0. Yes, voltage across the switch is 0, and current through the switch is the maximum current that can flow. That is nothing but the IC. यही रिजल्ट हमने कहाँ देखा था? The same result we saw here. The same result we saw here. The voltage across the switch is equivalent to 0, and current through the switch is the maximum current that can flow through the switch. The current through the switch is the maximum current that can flow through the switch. Is that clear? The same results are replicated over here. Is that clear? Yes, समझ sir. में आ रहा है? So in this condition, जब ये condition reach हो जाता है, when VCE is very small, VCE is, this is an ideal case. ये जो VCE 0 जो है, this is an ideal case. Practically, I'll tell you what is this voltage level. Practically, what is this voltage level? I'll tell you. Right? So voltage across the switch is 0, and current through the switch is the maximum. Right? This is nothing but I can say an on switch. Right? And what is the region in which this BJT will be operating? The region is called as the saturation region. And why it is called as the saturation region, I'll also tell you in the next slide. This is called as the saturation region. Is that clear? So what is that we have done till now here is, अभी तक हमने क्या किया है? We have taken an ordinary mechanical switch, एक ordinary mechanical switch लेके, we just saw what are the results we get when the switch is open and the switch is closed, and we just try to replicate those results by replacing a switch with a BJT. एक BJT से हमने replace करके देखा कि whether I am able to get those results. Yes, I was able to get those results, almost close to those results, right? And yeah, this was in open position and this was a closed. Nothing but on switch बोलो या closed switch बोलो, it can be called as a closed switch. On मतलब क्या होता है? This is nothing but a closed switch. So what is that I need to make sure is my base emitter junction should be fault biased. That is the first thing that I need to make sure. And after that, what is that I need to do is I need to increase my base current. If I'm increasing my base current, my collector current will increase. Right? ये चीज आपको पता होना चाहिए. If my base current is increasing, my collector current will increase. And base current कैसे increase होगा? By increasing VBB. If I'm increasing my VBB, my base current will increase. Because of that, collector current will increase. And if my collector current is increasing, कहाँ चेंज देखने को मिलेगा? आपको चेंज देखने को मिलेगा VCE में. VCE will reduce. VCE will reduce. So if I choose my parameters beta and RC, nothing but circuit parameters, nothing but RC को इस तरीके से choose करता हूँ, such that इन दोनों का product 0 होता है किसी point पे जाके. So at that point of time, VCE will be equal to 0. Is this clear? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Okay, fine. Okay. So next slide. जब एक BJT switch के act करता है, and BJT is acting as a switch. Okay. What about the biasing of the collector junction and emitter junction? BJT and yes, anyone? What about the biasing of emitter junction and collector junction? बताइए कोई. I told you एक slide में बताया था कि this is an important slide. Like BJT can act as a switch or an amplifier. That completely depends on what emitter junction and collector junction में depend करता है. बताया था मैंने एक slide में. Yes, sir. You remember that?
I told you that BJT can act as a switch or it can act as an amplifier. And whether to act as a switch or an amplifier, that totally depends upon your, इस पे डिपेंड करता है emitter junction and your collector junction. Emitter based junction, collector based junction पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था आपको. इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से एक्ट करेगा. Do people remember this or not? Yes, sir. Yes sir. तो फिर बताइए, एम्पलीफायर की तरह एक्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द बायसिंग ऑफ दीस टू जंक्शंस? फॉर दिस टू एक्ट एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह एक्ट करने के दोनों की बायसिंग क्या होनी चाहिए? Sir, JE forward bias और JC reverse bias. Yes. JE should be forward bias. हमेशा आपका JE जो होगा that will be forward bias and JC should be reverse bias. And इन दोनों केस में कैसे एक्ट करेगा? This will act as an amplifier. This will act as an amplifier. This is what you should know. ठीक है? And closed switch के लिए, if this has to act as a closed switch, दोनों जो होंगे, दोनों forward bias. yes, both should be forward biased. And if this has to act as an open switch को act करने के लिए और दोनों Sir, reverse reverse bias. दोनों होने चाहिए reverse biased. Both should be reverse biased. Okay, so let me write that point here. So this as an on switch and this as an off switch. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहले ऑफ के बारे में देख लेते हैं. यहाँ अगर हम ऑफ की बात करें तो मेरा VB जो है दैट इज रिवर्स बायस. यस, मेरा VB बेस एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज लेस दैन 0.7. तो माय बेस एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस. सो बेस एमिटर का क्लियर हो गया. एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा, दैट विल बी आल्सो रिवर्स बायस, बिकॉज दिस VCC विल बी वेरी लार्ज. राइट. सो नथिंग बट यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा एट दिस पॉइंट पूरा VCC यहाँ पे अवेलेबल होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस VCE इज नथिंग बट द वोल्टेज एट द कलेक्टर. क्या मैं बोल सकता हूँ VCE इज नथिंग बट द वोल्टेज एट द कलेक्टर, बिकॉज VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE. VE क्या है? इट इज 0. सो VC कितना हो जाएगा? VCC के बराबर हो जाएगा. एंड व्हाट अबाउट द वोल्टेज एट द बेस टर्मिनल? The voltage at the base terminal is less than 0.7. This is nothing but P type and this is nothing but N type. तो यहाँ पे जो वोल्टेज है कम है in comparison to my N side. N side का वोल्टेज जो ज़्यादा है. Nothing but this junction is also reverse bias. तो जब हम open switch की बात करते हैं, मेरा जो emitter based junction है that is also reverse bias and my collector based junction that is also reverse bias. So this condition is satisfied here कि दोनों reverse bias होंगे तब जाके मेरा switch जो होगा open होगा. Is this clear? हेलो. यस सर. यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दोनों रिवर्स बायस में, बेस एमिटर रिवर्स बायस में है एंड कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस में. रिवर्स बायस में क्यों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस कलेक्टर के पास में जो वोल्टेज है, राइट, द वोल्टेज एट द कलेक्टर इज नथिंग बट द वोल्टेज एट VCE. एंड व्हाट इज द वोल्टेज दैट इज इक्वल टू VCC, जो कि 5 वोल्ट्स होगा, 12 वोल्ट्स होगा. एंड व्हाट इज द वोल्टेज एट बेस टर्मिनल? द वोल्टेज एट बेस टर्मिनल इज लेस दैन 0.7. राइट. सो दोनों को कंपेयर किया जाए, द वोल्टेज एट this collector terminal will be large when compared to the voltage at base terminal. So once I can say this is also reverse bias. तो यहाँ पे देखिए बेस एमिटर जंक्शन तो हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस. बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. व्हाट अबाउट द कलेक्टर बेस जंक्शन? What is the terminal at बेस के पास में? टर्मिनल की वोल्टेज कितना है? इस पर्टिकुलर बेस के पास में वोल्टेज कितना है? 0.7. Yes, voltage at B is 0.7. Okay, and कौन सा टाइप है? This is a NPN type transistor. NPN type transistor है. So this is nothing but my N side, sorry, P side होगा. This is nothing but my P side. Okay, and what is the voltage at this collector terminal? What is the voltage at my collector's terminal? Collector terminal के पास में voltage कितना है? 0. So 0. Yes, 0, because VC is 0 है. Nothing but VC क्या होता है? VC minus VE. VE already grounded है. So it is equivalent to VC. So VC जो होगा, so that is equivalent to 0 volt. And this is nothing but my
एन साइड, राइट। इन दोनों को ध्यान से देखकर बताएं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये रिवर्स बायस है या सॉरी फॉरवर्ड बायस है? पी साइड वोल्टेज कितना है? पी साइड वोल्टेज है 0.7 एंड एन साइड वोल्टेज जो है 0 वोल्ट है। क्या मैं इन दोनों को देख के बोल सकता हूँ कि दिस इज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन? Yes, sir. Yes. P side voltage is greater than my N side voltage. P side voltage is greater than my N side voltage. Base emitter तो already forward bias, right? Base emitter is already forward bias because emitter is grounded. Emitter के पास से voltage कितना होगा? 0 होगा. And base के पास से voltage है 0.7. If I talk about the base collector, when this is acting as a switch, so this collector के पास में जो voltage है that is 0 volt. And base के पास में जो voltage है that is 0.7. Again I can say that this is also forward bias. Nothing but मेरा बेस मीटर जंक्शन वो भी फॉरवर्ड बायस है एंड मेरा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है दैट इज आल्सो फॉरवर्ड बायस। ये जो 0 वोल्ट लिखा है दिस इज एन आइडियल सिनेरियो। एक आइडियल केस में जब हम लेके देखते हैं तो उस केस में ये 0 वोल्ट होता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट 0, दिस इज समवेयर अराउंड 0.1 टू 0.2 वोल्ट्स। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ये जो आइडियल केस, ये आइडियल सिनेरियो जहां पे आपका वोल्टेज 0 है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एक्चुअली कितना होता है? VCE की वैल्यू कितनी होती है? VCE इज अराउंड 0.1 टू 0.2 वोल्ट्स। अगर ये 0.1 0.2 है तब भी ये फॉरवर्ड बायस है। आप देख सकते हैं कि बेस के पास में जो वोल्टेज है दैट इज 0.7 एंड कलेक्टर पास में जो वोल्टेज है दैट इज 0.2। N side, sorry, P side is more positive when compared to my N side. Again I can say that my diode is nothing but my base collector junction is forward biased. Is that clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. I'm just trying to tell you that कि ये जो कंडीशन है इसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमसे ये जो कंडीशन है इसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मेरा जो बेस मेरा जो कलेक्टर जंक्शन एंड बेस एमिटर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस है, इसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड वी आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आल्सो एंड वी आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन आल्सो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आप ऑफ कंडीशन में जाके देखेंगे दोनों रिवर्स बायस होंगे एंड अगर आप ऑन कंडीशन में जाके देखेंगे दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। दिस इज व्हाट यू शुड नोटिस एक्चुअली। इस तरीके से आपको नोट करना चाहिए। ओके, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि ये जो कंडीशन है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये जो कंडीशन है ये कहाँ देखने को मिलता है, राइट? फाइन, वन सेकेंड, लेट मी ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन यू विल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड। इसको मैं हटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं है शायद, वैसे तो यू ऑलरेडी नो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो व्हाट आर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? बता सकते हैं कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एनीवन, कि व्हाट आर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी भी सर्किट में हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? एनीवन? बस बताइए। सर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ। Yes, exactly. Nothing but output voltage versus input voltage के बीच में जो ग्राफ होता है that is nothing but my transfer characteristics. ठीक है? So this is nothing but my V out and this is nothing but my V in. V input. ठीक है? V out क्या होता है? एक BJT. What is output voltage in case of BJT? आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या होता है? VCE. Yes, VCE is nothing but my output voltage. VCE is nothing but my output voltage. And what is input voltage? Input voltage is nothing but my input voltage क्या होगा? VBB. Not VBB है. Let me tell you. किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो वोल्टेज जो अप्लाई है इस वोल्टेज की वजह से आ रहा है, जो भी वोल्टेज आ रहा है, नो डाउट इनपुट वोल्टेज नथिंग बट VBE। बट यहाँ पे जिस वोल्टेज को हम इंक्रीज करें जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, व्हाट इज दैट वोल्टेज? दैट वोल्टेज इज VBB। इज दैट क्लियर? किसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं? इस VBB की वजह से। अगर इस VBB को मैं चेंज करूंगा तो आई एम गेटिंग चेंजेस इन VCE। सो व्हाट इज दैट आई विल हैव हियर इज, सो आई विल हैव हियर द
इनपुट वोल्टेज VBB को मान लेते हैं. Okay. So now what happens? Anyone? यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा. once again. Let me draw this here so that you get some clarity. So that I need not go back again and again. This is nothing but my VBB. Nothing but actually यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इसका जो ड्रॉप है मैं इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहा हूँ. यहाँ पे जो ड्रॉप है इसको ऑलमोस्ट मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूँ. थोड़ा सा एनालिसिस आपका इजी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे. बस ये जो मेरा इनपुट वोल्टेज है एंड दिस इज नथिंग बट माय आउटपुट वोल्टेज. दिस VCE इज नथिंग बट माय आउटपुट वोल्टेज. ओके, अब मुझे बताओ when this VBB is less than 0.7, when this VBB is less than 0.7, what will be your output voltage? जब तक आपका इनपुट वोल्टेज 0.7 से कम होगा, आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? What is output voltage expression? Output voltage expression can be written as VCC के इक्वल होगा. VCC minus IC into RC. Very good. Right? If this is less than 0.7, जब 0.7 से less होगा, IB will be equal to 0. And when IB is equal to 0, what will happen to my IC? IC भी 0 हो जाएगा. जब IC 0 हो जाएगा, what would be the value of VCE? VCE will be equal to 0. Sorry, VCE will be equal to VCC because this term will be equal to 0. ये 0 हो जाएगा. So VCE will be equal to VCC. Right? So you will be getting a constant value over here. एक constant voltage आपको मिलेगा. Right? And कितना होगा उस constant voltage? वो होगा आपके VCC के बराबर. कहाँ तक? जब तक आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.7 रीच नहीं कर सकता. राइट? वंस दैट रीचेस 0.7, व्हाट विल हैपन? 0.7 हो गया मतलब व्हाट विल हैपन? आपका जो बेस करंट होगा दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग. एंड वंस द बेस करंट स्टार्ट फ्लोइंग, व्हाट विल हैपन? आई विल हैव द कलेक्टर करंट. यस, 0.7 से ज्यादा हो रहा है मतलब क्या है? माय बेस करंट स्टार्टेड फ्लोइंग. एंड वंस द बेस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, व्हाट विल हैपन टू माय कलेक्टर करंट? Collector current will also start flowing. Collector current will also start flowing. तो अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे? कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मैं VBB को बढ़ाते जाऊंगा बेस करंट इंक्रीज होगा. एंड एज द बेस करंट इज इंक्रीजिंग, कलेक्टर करंट विल इंक्रीज. एंड एज द कलेक्टर करंट इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ VCE? सो डिक्रीज होता जाएगा. It will decrease. अगर हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखते हैं, if IC is increasing, what will happen to the value VC? VCE will reduce. VCE जो होगा that will start reducing, right? That will start reducing to a particular voltage. ठीक है? एंड हमने देखा था आइडियल केस में VC की वैल्यू कहाँ तक गई थी? VC की वैल्यू कहाँ तक गई थी? VC की वैल्यू गई थी till 0 volts. Yes? VC का वैल्यू कितना था? 0 volts. Finally, right? But that is what you will not notice here. What is that you will notice here is if you talk about the practical characteristics. Practical characteristics की बात करते हैं. After some particular value, it will saturate and it will be a constant voltage. एक constant voltage maintain करेगा, right? And इस voltage का magnitude कितना होगा? That will be almost around 0.1 to 0.2 volts. Is that clear? It was here. Right? So what happened when once this is less than 0.7? जब ये 0.7 से कम है तो उस केस में output voltage is equivalent to VCC. And once the input voltage starts increasing, what happens is आपका जो output voltage है that started decreasing. आपका जो output voltage है that started decreasing, right? And what is that we have seen in the previous slide was it came to 0. It came to 0. That is an ideal case. उस तरीके से अगर मैं beta and RC को select करता हूँ, it can go to 0. But practically what happens is after some particular value, it will saturate. It will saturate and it will maintain a constant. It will maintain a constant value. It will maintain a constant value. Why it is happening so is? What is IC? IC is equivalent to beta times IB. ठीक है? And ये जो equation है, this is only valid in your active region. This is only valid in your active region. जब तक ये equation आपके पास valid है in the circuit, nothing but your circuit is acting as an amplifier.
योर सर्किट इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, जब तक आपके पास ये इक्वेशन वैलिड है इन द सर्किट, तब तक nothing but it is acting as an amplifier. What do I mean by that is, if I'm increasing the IB value and accordingly my IC is also increasing or decreasing depending upon the value of beta, so depending on the value of IB, that means my circuit is acting as an amplifier, right? If this equation is not valid, means either that may be operating in a cutoff region or else that might be operating in a saturation region, right? Cutoff region का मतलब क्या हो जाएगा? IC will be equivalent to 0. IC will be equivalent to 0, right? And saturation का मतलब क्या हो जाएगा? Whatever may be the value of IB, इस पॉइंट के बाद देखिए, इस पॉइंट के बाद अगर आप ध्यान देते हो, nothing but I'm increasing my input voltage. इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मेरा जो बेस करंट है that is increasing, my base current is increasing, but my collector current is not increasing, it has maintained a constant value, nothing but collector current जो है ये constant हो गया है। जब ये collector current constant हो जाएगा, obvious बात है, my VC, nothing but my output voltage will be a constant voltage, it will be a constant voltage, it will not change, Why it is happening so is, बेस करंट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो कलेक्टर करंट बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग फॉर द कंडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन आर इंक्रीज। एक पॉइंट आएगा जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन, नथिंग बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स will be responsible for this collector current, right? If I'm increasing the base current, nothing but if I'm increasing this input voltage, कहीं से नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है they already started participating in the conduction, right? Whatever may be my input voltage, my collector current is not going to change, nothing but it has saturated to a particular value, इसलिए हम इस रीजन को क्या कहते हैं? This region is called as the saturation region. Nothing but you will not find any change in IC with respect to IB. IB is increasing, no doubt, IB आपका increase हो रहा है, लेकिन आपका जो IC जो होगा that is fixed, change नहीं हो रहा, that has saturated to a constant value, right? As this has saturated to a constant value, what will happen to my output voltage? Output voltage will be also saturated to a particular value, because output voltage किस पे डिपेंड करता है? VCC, IC, RC. VCC कांस्टेंट है, RC कांस्टेंट है, IB जो कि कांस्टेंट हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है जो VCE जो होगा even that will be a constant value. Is that clear? So यहाँ से जो region होता है from this point to this point, this is called as the cutoff region. And this is called as the active region. Cutoff region, उसके बाद में active region, and then you will be having a saturation region. So these are nothing but the transfer characteristics. In the next class, we will pick a numerical pick करेंगे, so as to understand all these regions, कि किस region में कितना current flow कर रहा है, यहाँ पे जितना भी हमने discussion किया है, is that valid, is that numerical or not? We'll just try to validate these results using a simple numerical, and we'll see कि कौन सा junction forward bias है, कौन सा junction reverse bias है, and so on. Is that clear? Sir. Yes, sir. Yes, समझ sir. में, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को BJT as a switch? Yes, sir. I hope it is clear. अगर आपको doubt है तो you can ask me. If you have any doubts, you can ask me. Okay. So let me take your attendance. The reason for me ending the class 5 minutes पहले इसलिए ले रहा हूँ because I have a meeting to attend. So I'll be taking your attendance now.